and a very, very bubbly person who will be talking about, let her do the talk, but I will introduce her. So Dr. Anu Mehta, she's been a chairperson and a member of a board of directors of Meta Health International. She's a doctor of philosophy, the Open International University for Complementary Medicine, Colombo, Sri Lanka. Dr. Anu Mehta is a first master trainer in Meta Health. Matrix reprinting, advanced clearing energetics. She's a trainer in information technology called NES Health. EFT, matrix re-imprinting, color psychology. He's also a facilitator, trainer, hypnotherapy, Tibetan singing bowl. I have experienced this Tibetan bowl. It was just an amazing experience. And family constellation. She has also trained in tarot cards, angel cards, Lee Rentina, pendulum dowsing, neurographic drawings. She's an author and an international speaker. She has been a speaker in countries like UK, Egypt, Prague, Czech Republic, I don't know how to pronounce that, Luxembourg, Hawaii, and Barcelona, Spain, Colombo, Sri Lanka. She has won many accolades for her work in Meta Health since 2014. In 2017, despite demonetization, she created the 4-day, the 8th International Meta Health Conference, the 4 days of post-conference workshop in Mumbai, India, with speakers across the world like India, UK, Germany, Japan, Serbia, New Zealand, Norway, Czech Republic, Egypt, Ghana, Canada, Denmark, and Netherlands graced the stage sole aim of self-empowerment and development by transforming mindsets. Various aspects around health were covered during this particular conference, where mind, body, soul connection was taken as a topic. New developments in the field of health was one of them. Sexual awareness and mental health awareness was the topics which was taken at that particular conference. Dr. Anu Mehta assists in healing people by identifying the stress which causes physical illness or psychological illness. She believes in empowering people. According to her, real empowerment can only happen when people identify their stress and then go ahead and make the change that is required to make them happy and healthy life. I so truly believe this particular thing. The only person who can make that change is you. She always says, don't give up. Just give yourself permission to set yourself free from the chains that you're holding on down and making you cry. So go ahead and make that one change today that can make you feel happy and complete. That is so profound, Anu. So COVID-19 was an unknown threat. The enemy seemed to prowl on mankind. The year 2020 had progressed into a nightmare for many people around the international borders. Fear lurked into the human psyche to an unknown, unseen enemy. To add to the woes, the lockdown came as a blow to the finances and the territorial concept. People were required to stay away from the loved ones, and humans who were usually social were isolated in their own homes. The big question now was how to engage self and found a boundary across all boundaries. Dr. Anu Mehta came up with an idea to engage people on the Zoom and let people feel connected, comfortable, and safe. Various speakers were invited to talk about their profession, home, parenting, pets, and so on, and I was one of them. Over 345 sessions were conducted. These sessions were very, very educative, fun, and solace, and also source of entertainment as well as learning for everyone on call. Everyone on Zoom call could share, laugh, cry, have fun, learn, unload themselves to feel the new themselves and ready to face challenges with fun and joy. This was a family actually in true sense. She was about to stop it in between, but I think she continued for a longer period of time. I think it's still on. Awesome. The fear of the enemy was defeated and the isolation was replaced by bonding across countries and continents. Speakers from various countries were enrolled: Thailand, Germany, Denmark, Egypt, Finland, Australia, Canada, Israel, USA, Singapore, wow, UK, Dubai, Prague, and South Africa.
The spark had turned into a fire and turned doom into happiness for all those who joined in. This platform created business and love and light for people across the globe. Even today, we are working with the concept of love, grace, and light. Recently, they have completed 31 sessions on Facebook with panel discussions on various topics of life. They have completed 1 year of free seminars. She is very grateful to the universe for supporting her. So over to you. This was an amazing profile I have ever read in my life. And she is much more than this profile. So guys, do not miss even one word what she's going to speak. Just be attentive, just be there, just be present. You will gain so much in this couple of hours. Over to you, Anu. Thank you. Could you give me the sharing rights, please? So, hi everybody, I'm Dr. Anu Mehta, and to be really honest, I wrote that, that introduction kind of, when you start as a housewife and think you are nothing, and then slowly every day when you take a small step, and then someone reads that in front of you, you just sit down and I'm humbled because that believes that each one of us have to only take one small step. And we've completed actually 40 sessions of the Facebook, which again started with COVID positive patient who could not come back and face the world. I tried everything. And then at the end, we said, let's go and put you on the Facebook. And she said, Facebook? I said, in next 10 minutes. So the model of that right now is we don't do any tayari. We call you speakers, and all of you have supported so beautifully. There are many who still not called because it isn't just the idea just came up, and we don't decide beforehand what to do, what not to do. It's without planning. And I'm very grateful to each and everyone in the Venus group who has been there as a part of those sessions. Some of you have not been part of, and I would love you to be part of it. So let me stop this and go straight over to my PowerPoint, because today what I'm sharing with you is something that's very close to my heart. Okay. So I did cut down the slides, and if we need more slides, I'll get them back, but I really don't think that's going to be the story. So I worked in the field of disease, and disease, if really most of you know here, means I am not at ease with something. Now, what am I not at ease with? It's our conditioning. Remember when I said I was just a housewife? How was I talking about it? Was I talking about it in a proud manner? I'm just a housewife doesn't sound proud at all. And from where is that conditioning coming? ये देखिए ऐसे है कि can I speak in Hindi also, or people only want me to speak in English? I think that's fine. It's the national language, so everybody is well versed with Hindi. Please talk as you are comfortable. Bole ma'am, bole. Thank you so much, because I always believe that no matter what we do, our language, if we leave that behind, we cannot really explain anything properly. तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ऐसे जैसे ये हाथी छोटा सा है, इसे खोंटे से बांधा गया है. And you know what, when we are young, and I was young, I was 6 or younger than that, I was told बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि शक्ल सुंदर होनी चाहिए. तुम्हारी बॉडी कहाँ जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी होनी चाहिए. अब मिडिल ऑफ द नाइट भी तुम्हें उठाया जाए ना, तो कोई देख के ये ना कहे कि हाँ तुम्हारी फेस पे इतनी झुर्रियां, तुम्हारे फेस पे अच्छा एक्सप्रेशन नहीं है. जस्ट सम ऑफ द बिलीव्स दैट आई एम गिविंग यू. और काम वाम नहीं करती लड़कियां, आराम से घर पे बैठती हैं. दिस इज व्हाट केम फ्रॉम माय नानी हाउस. बट मेरे एक पापा हैं जो अभी नहीं है दुनिया में. 30th ही विल कंप्लीट 3 years ऑफ नॉट बीइंग देयर ऑन द प्लैनेट अर्थ. बट बिलीव मी, पिछले 3 साल से आई थिंक ही इज बीन माय ड्राइविंग फोर्स. ही इज बीन पुशिंग मी इन द मिडल ऑफ द नाइट आल्सो. आगे क्या? He had a deep desire that I do something in my life. एक ही चीज सुनी उनसे कि अनु,
जाता। स्पेशलिस्ट होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं पता नहीं क्या क्या करता। I tell you one thing that is very clear: whatever your parents tell you becomes a part of your learning and your conditioning. One of the major things where I was stuck, and for a very long time, and my mentor Rob Van Overbruggen said to me, देखो, look around, boundaries नहीं है कहीं, तुम खड़ी हो और आज तो वो खोटा भी नहीं है, तुम चलने को तैयार क्यों नहीं हो? You want, I'll hold your hand, so you won't feel alone. ऐसा साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता. This is our beautiful Venus family जो मेरे साथ खड़ी हुई. किसी को भी बुलाया तो 1 मिनट में बोले हाँ मैं आ रहा हूं. जब आप लोग साथ खड़े होते हैं, that is when the person who is in conditioning gets the help to go out. आज का टॉपिक एक्चुअली ड्राइंग्स का है और हेल्थ का है. जो हमारी कंडीशनिंग है ना, वो हमें हमारी हेल्थ के बाहर जाने नहीं देती. मतलब वी हैव अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग, सर्टेन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, हम उसी में अटक के रह जाते हैं. अगर सरिता बता रही थी that she analyzes the signatures, the graphology, आप लिखते क्या हो. Drawing is even more profound, and she also does drawing analysis. Everybody does it and they do it differently. Now, I have learned from Bernie Siegel, who's an oncologist and has been part of the Meta Health community, and he uses it for children who are not well. His teacher was Kubler-Ross. Kubler-Ross is a grief specialist. She's not there in this world anymore. She wrote major books. If you go on the Google and search her name, she is amazing. Now, I'm very, very lucky to have attracted the best teachers in the world for myself. हुआ ये कि विक्रम के एक विक्रम इज माय हस्बैंड, उनके एक रिश्तेदार बीमार हो गए, उनको हो गया कैंसर. और मेरी ना, मैंने बहुत अच्छे से सीखी नहीं थी, सीरियसली नहीं ली थी यार. जैसे हम करते हैं ना, सीख लिया और बोला चलो एनालाइज करेंगे, बस कुछ ऐसा ही किया मैंने. He was a cancer patient and I made him draw, and when I looked back at his drawings, something didn't seem okay, but I wasn't alarmed or anything. आपको पता है क्या हुआ? एक उसने क्लॉक बनाई हुई थी और क्लॉक के ऊपर 8:30 बनाए हुए थे. And the clock was obviously stuck over there. पेपर है यार, वो हिल तो ना सकता है. It's not mobile. He went and committed suicide. He jumped in front of the train. And the time at which he jumped was 8:45. इसका पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है हेल्थ साइट के ऊपर. If you want, I will send a link later. But this really made me open my eyes to the value of drawings and what we are not even looking at. छोटे बच्चे ड्राइंग करते हैं, आप बैठ के डूडल करते हो, and कितने लोगों ने तो क्रेयॉन हाथ में पकड़ के नहीं देखा. If you want to bring fun back in your life, सीरियसली आप सबको कहूंगी, डिजीज को दूर रखना है, कुछ और नहीं तो क्रेयॉन्स लेके, एक पेपर लेके ड्राइंग करना शुरू करें. कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसके एनालिसिस क्या है. फर्क ये पड़ता है कि आपके अंदर जो सबकॉन्शियस में चल रहा, वो आपने पेपर के ऊपर थ्रो किया. आपको समझने की जरूरत क्या है कि क्या थ्रो किया. वैसे भी 24 घंटे वी आर ओनली थ्रोइंग स्टफ एट पीपल. चलिए आगे बढ़ते हैं. This is a drawing of a very, very successful executive. She stays in Paris. She's an Indian girl. She's married to an Indian boy, but she's really not an Indian. इसका मतलब समझते हैं आप? परवरिश जो मैंने खूंटे वाली बताई is Indian. रहती कहाँ है? पेरिस में. शादी किससे की माँ बाप ने? इंडियन से. क्योंकि जात गोत्र सब कुछ तो बहुत जरूरी है ना हमारे लिए. हम इंडियन है तो हम इंडियन से ही शादी कराएंगे. अब भाई उसकी परवरिश बाहर हुई है, यूरोपियन कंट्री में, नॉट इन वन प्लेस, इटली, ऑस्ट्रिया, नेम इट. क्या वो इंडियन है? क्या वो इंडियन है? नॉट रियली. बट वी वांट टू पुट हर बैक इन दिस ब्रैकेट, ये वाले में, कि तुम इंडियन हो, इंडियन की तरह ही रिएक्ट करोगी और शादी में इंडियन की तरह ही चलोगी.
मतलब शादी हो गई, बच्चा पैदा करो, उसके बाद अपने काम को कम ध्यान दो, हस्बैंड का खाना बनाओ, और बाहर की कंट्रीज में पता है आपको सर्वेंट्स नहीं होते. Everything that we do, like we did in COVID, without help. She right now has a 4-year-old kid and she's not in love with her husband. She's in love with another man and has always been. कोई बेवफाई नहीं हुई है यहाँ पे, प्यार हुआ था, माँ बाप ने शादी नहीं कराई और इन्होंने कभी बताया नहीं. इश्क हुआ वो भी इंडियन से ही हुआ. चलिए अभी ड्राइंग देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है. विल एनलार्ज अ फ्यू थिंग्स, मेक इट स्मॉल. देखिए आप जरा ध्यान से. शी हैज गॉट अ मैट ओवर देयर. दिख रही है मैट? छतरी है, जूस है, बुक है. मैडम वहां लेटी क्यों नहीं है? एनीबडी वांट्स टू रिप्लाई? मैडम वहां लेटी क्यों नहीं है? दीपा जी, उषा जी, सरिता जी, ऑल आर न्यू गेस्ट, अदिति जी. She is not relaxed. She is too stressed. वेरी गुड, शाबाश. क्यों स्ट्रेस्ड होंगी दीपा ये? उषा जी क्यों स्ट्रेस्ड होंगी ये? कुछ भी हो सकता है. चलिए उषा जी से पूछते हैं. उषा जी, हर चीज जो वो खरीद सकती हैं उसके लिए उनके पास पैसे हैं क्योंकि शी इज अ हाई सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव. इनफैक्ट अभी प्रमोशन हुई है. मैट भी खरीद ली, छाता भी खरीद लिया, बुक भी खरीद ली, जूस भी खरीद लिया. लेट क्यों नहीं सकती? चलिए पूछते हैं उषा जी, सरिता जी से. एनीबडी? ये अच्छे कपड़े पहने खराब हो जाएंगे. अरे वाह, ये भी हो सकता है. अच्छे खराब. All of this is like a happy moment for this, but she is not happy. So whatever mat and chhatri and book, that is a symbol of happiness. She wants to relax over there, but she has separated herself from her happiness. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. कितना बढ़िया. ये जो करना चाहती है वो सब लाइफ में है नहीं. बिल्कुल. सारे इसलिए वो खड़ी हुई है, सोच रही है कि मुझे मतलब जो करना है मैं कैसे करूं, और मतलब रास्ता ढूंढ रही है कि मैं किस तरह से करूं और कैसे करूं. उषा, I've always admired you. बहुत अच्छे से आपने बोला. कहने का तात्पर्य यह है कि she has made herself as a sexy woman. क्लीवेज बनाया है. देखिए बहुत कम लोग क्लीवेज बनाते हैं. सीधी बनाते हैं, ब्रेस्ट बनाते ही नहीं है. Women don't have it. It's like that. बड़े सुंदर से तैयार हुई हैं पर लेटी नहीं है. और उनको जब मैंने ये पूछा तो she had tears in her eyes. क्यों भाई, tears क्यों आ गए उनकी आंखों में? She said, Anu, I have a couch in my living room. I have a beautifully decorated house which is one floored and a basement also there, and I made it myself. My husband did not buy it. In fact, he was without job. I was working overtime. But every time I sit down on the couch, my husband says, उठ जा, ये करके लेके आ. और इंडियन वुमन है ना, उसके माँ बाप ने कहा था सब कुछ करना चाहिए, तुम्हारा पति तुम्हारा देवता है, खुदा है. बस उसमें रब नहीं दिखता उसको. क्या करें, रब उसको कहीं और दिखता है. कैसी होगी जिंदगी सोचो. 10 साल हो गए शादी के, बच्चा ऑलमोस्ट 4-5 साल का हो गया और कोई हेल्प है नहीं, और घर पे वो आदमी लेटा होता है वो मैट के ऊपर. आप अब विजुअलाइज करें कि आदमी लेटा हुआ है. बनाया उसने लेटा वो, क्योंकि यही फितरत है हमारी इंडियन शादियों की. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसी पिक्चर को थोड़ा एनालाइज करते हैं. 1 मिनट. अब मैं आपको कुछ फ्लिप साइड दिखाऊंगी, फिर वापस इस पिक्चर पे आऊंगी. ये यहाँ देख रहे हैं आप, जहाँ औरत खड़ी है और मैट खड़ा है. दिख गया शांति? ओके, चलिए अब इसको ओवरलैप करेंगे पिक्चर को. इनकी दूसरी पिक्चर ये थी. क्या है? जहां पे वो खड़ी हैं वहां पे क्या है? चलिए यार, सामने दिखाई दे रहा है, फटाफट. कॉफिन है.
चलिए, यहाँ ये है और यहाँ पे कौन है? कॉफिन है. This is where I picked up that she wants to kill herself. ये जिंदा नहीं रहना चाहती. और जहां क्रॉस दिखाई दे जाए आपको तो समझो कि मॉरल एटीट्यूड जिंदगी में इतना ज्यादा है कि मुझे मॉरलिटी का पार्ट इतना पढ़ाया गया है कि इवन अ थॉट ऑफ एन अदर मैन, शी नेवर वेंट टू द अदर मैन, बाय द वे, शी इज नेवर गॉन एंड इंडल्ज इन एनीथिंग, बट वो जो अजनबी है ना, उसमें उसको रब दिखता है, दोस्त दिखता है. और जो घर पे है ना, उसमें ना रब दिखता है ना दोस्त दिखता है, उसमें एक भूत दिखता है उसको. बट क्या है ना, हमारी सोसाइटी ऐसे वाले प्यार को प्यार नहीं कलंक मानती है. और वो पेरिस में रहने के बावजूद वो अपने आप को ऐसे मार देना चाहते हैं. और अब थोड़ा सा देखिए, जहां पे ऑल द मेन आर स्टैंडिंग, ऑल द पीपल हु आर स्टैंडिंग, क्या जरा ध्यान से देखिए, क्या ये बॉडी का कौन सा हिस्सा लगता है? चलिए, ये 1 2 3 4 5 6 लोग खड़े हैं, कौन सा हिस्सा लगता है ये बॉडी का? चलिए फटाफट बताइए. रिम्पल, They don't look like man at all. They are ghost. कोई बॉडी का हिस्सा नहीं दिखता है, वो घोस्ट के जैसे दिखते हैं ना. देखो, चलो men see it. Which part of your body is this? The private part of a Oh, male. private. basically. Okay. This is My a God. Kamal ji, Gopu ji, Gopu sir, Manish. This is a penis. How many? 1 2 3 4 5 6 7. ऐसे वाला नहीं, यहाँ पे सिर्फ कितने हैं? 6 हैं. So in her mind, she liked whoever she liked from, as child. Her fantasy is that she can make love to them. But can she? Is she allowed to? मैं फिर से बोलती हूँ, पेरिस में पैदा नहीं हुई. पेरिस, इटली, ऑस्ट्रिया, वहां की कल्चर क्या है? When the child is 12 or 13, they have a boyfriend, they are making out. Was she allowed to do all that? This is what we call sexual frustration. You are only allowed to give yourself to a man, and that man has to be your husband, even if उसमें रब नहीं दिखता तुमको, दोस्त नहीं दिखता उसमें. और जहां जहां तुमको दोस्त दिखता है वहां पे अलाउड नहीं हो आप. So this made me realize that she has had fantasized about 6 different men in her life with no action, and she rather die than take an action. She rather die before she even go and tell anyone कि मुझको, शायद I also feel like other girls, other European girls. और आप एक बहुत बढ़िया चीज देखिए, 1 2 3 3 clouds, 1 2 3 कलर्स पे तो मैं अभी नहीं. 1 2 3 clouds above her coffin. These are 3 people in her life, that is she, her husband and her child, जो उड़न छू हो जाएंगे अगर उसने सुसाइड कमिट कर ली. क्या करूं? जाके सुसाइड कमिट कर ले. चलिए, all the I want your feedback. What do you think I should give her an advice? उषा जी, क्या बोलूं इसको? सुसाइड तो नहीं करना चाहिए, मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसा कहते हैं लोग. कुछ हटके करना चाहिए लाइफ. कुछ हटके करना चाहिए ना. अनीता जी, क्या करना चाहिए? और ये कोई सिचुएशन सिंपल नहीं है, अनकॉमन भी नहीं है. हाँ जी, क्या करना चाहिए इसे? आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए. हाँ, नहीं, हेल्प तो वाकई चाहिए इनको. शुक्रिया अनीता उनके लिए. सरिता, व्हाट डू यू थिंक शी शुड डू? She should first connect with a person of whom she can talk out, maybe a friend or a relative, or a coach or a counselor, Right. and have a purpose which will make her happy, and not just have
A purpose is one of the things which I would say which will make her happy, not on the grounds what people are telling, what makes her happy. That purpose. उसको सिर्फ एक ही चीज हैप्पी करेगी, if she gets the man who is already married, has a child, but is her childhood sweetheart, is an Indian. ना वो मुझे क्या, कमल जी वो गाना गा दे, ना तुम हमें जानो जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। बिल्कुल यहीं पे प्यार भी हुआ तो कैसे कमबख्त से, जो शादी उसके सामने कराया उसको बोल नहीं पाई, ना माँ बाप को बोल पाई ना उसको बोल पाई, उसका बेस्ट था, हर कदम पे उसकी हेल्प करी उसने, बस अपनी हेल्प नहीं कर पाई। मरने को तैयार है पर बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि क्या है ना, हम इस खूंटे से बंधे हुए हैं। राइट। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई होप यू एंजॉयड सो बिट, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट इधर एक चीज तो बनती है आपको दिखानी। आई एम ये रिमोट कंट्रोल है। अच्छा, आई कांट मेक इट बिगर हियर। अच्छा ये पीछे दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे तैरते हुए बंदे पीछे दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? अच्छा फिर से दिखाती हूँ। एक शिप है और 3 लोग तैर रहे हैं। Who do you think people who are sinking in the water? उनकी सिर्फ फेस दिखाई दे रहा है। आपको पता है ये रियलिटी में इनके पास, इनके साथ ये हुआ। आफ्टर दिस पिक्चर she took her son to meet in her parents, और वहाँ पॉन्ड जहाँ पे you could swim, a kind of a artificial lake, and her son and her father both almost, and she was trying to save them, scream for help, but in reality she had manifested it because she really did not want to exist, and she didn't want to die alone. She kept thinking या तो मैं माँ बाप के पास को छोड़ दूंगी या फिर मैं भी इन पानी के अंदर सिंक कर जाऊंगी and I will die. But जब उसके बेटे देखा, उसने सिंक करते हुए फादर को देखा, she actually jumped in to help them survive and did not think about herself. एक ही चीज उसने मुझे बोली फोन करके, कमाल होगी, हो गया, I still think I will survive. अब ये मेरे पास कोई आए ऐसी ड्राइंग के साथ तो मुझे कैसे मालूम है कि दिस पर्सन विल बी एबल टू मेक इट इन लाइफ, दे विल नॉट कमिट सुसाइड। चलिए देखिए इस ड्राइंग में कुछ है ऐसा जिससे आपको पता लगेगा, डूबने वाला सीन भी हो गया, ये रेस्ट भी नहीं किया, लेकिन सन शाबाश। एंड सन कहाँ होना चाहिए जिससे पता लगता है कि बच जाएगा आदमी फ्यूचर में। ओके सो सरिता इज वन वे दैट been taught by Kirti Bakshi, and with due regard to her, future वाला ये वाला panel, future हम बोलते हैं इसको, हम past I don't do analysis with Kirti Bakshi's point of view. Telling you she does future and I would say कई बार very overlapping और पता नहीं लगता कि कहाँ पे future है कहाँ पे past है। I would break this drawing down, जहाँ पे आपको वो दिखाई दे रहा है ship, that's the north of the drawing, हुआ south, तो जहाँ पे अभी sun है that's the east। अगर sun east में है, there is every possibility that the person will survive. That's just a tip for all of you. आगे बढ़ते हैं, hope you enjoyed much. Before I go further, because it's going to get interesting. Any questions, guys? यार मेरी audience Going great. We'll keep the questions for the end. You can move on because we have only 10 more minutes. No problem. अभी ये उसी की drawing है, the same. Okay. Can you see that she in the middle of the page floating away? पीछे से कुछ पाइन ट्रीज दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लग रहा है that drawn with the white chalk or with the white color, or maybe it's over, right?
Can we mute the mic because I'm having a lot of disturbance? Thank you. The color of her dress is purple. The color of her dress is purple. And Yes. dots inside are yellow in color. उषा जी आपको म्यूट करना पड़ेगा. I want you to get this very clearly, guys. अगर आप पर्पल देखते हैं लोगों की ड्राइंग में, they are obsessing about death. Again, an evidence that she does not want to exist. उषा जी आपको अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा. हाँ किया मैम. Okay. हेलो. Anu, sorry to interrupt, but what about, I love the color purple. हाँ दिख नहीं रहा ना अच्छे से. कलर पर्पल आप डिपेंड करता है आपने ड्राइंग में कहाँ डाला. Okay, okay. ओके. लगता है दीपा कि आफ्टर द डेथ ऑफ योर फादर और मदर हैव पिंक पर्पल इन योर ड्राइंग. सो वी विल हैव टू आस्क कि क्या चल रहा है जिंदगी में. Okay, okay. आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि सेल्फ ड्राइंग बोला था उनको करने को, पूरा पेज छोड़ के इतनी सी टिड्डी सी छोटी सी बनाई है जैसे कि वो है ही नहीं. और हमेशा पैर देखिए दोनों अलग नहीं हूँ. लिव शुड आई नॉट लिव. कितने डॉट्स हैं उनकी ड्रेस पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पिछले 10 साल से शादीशुदा हैं. 10 साल से सोच रही हैं should I be there or should I not be there. Now it can't be a coincidence, right? कुछ. अब आपको असली पिक्चर दिखाती हूँ. उनको बोला था सीनरी बनाने को और उनको बोला बनाने को. साइड पे बनाई है और उन्होंने सीनरी दूसरी साइड पे बनाई है. नाउ लुक व्हाट हैज शी मेड इन द सीनरी. और देखिए ये छोटी सी यहाँ पे आपको से अगर दिखाई दे रही है, she is duboing under the water. So she is insignificant. Not only insignificant, ये देखिए दीपा, आप अगर पेपर को ऐसा सीधा करके, मैंने इसकी दोनों साइड ली है, फिर से दिखाती हूँ. जहाँ पे वाटरफॉल है इस ड्राइंग में, वहां पे उन्होंने अपने आप को बनाया. हाँ, करेक्ट. जहाँ पे वाटरफॉल है वहां पे उन्होंने अपने आप को बनाया. कैन एवरीबडी सी दैट? यस, यस. ध्यान से देखिए, जहां पे वाटरफॉल है वहां पे उन्होंने अपने आप को बनाया. शी इज गेटिंग सबमर्ज्ड इन द वाटर. यस. और नीचे 3 ट्रीज खड़े हैं, उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका भाई, जो उसको वहां से निकलने नहीं देंगे आउट ऑफ दैट कंडीशनिंग. वो सारी दुनिया के से नहीं लड़ सकती है. सॉरी, वो सारी दुनिया से लड़ सकती है, अपने माँ बाप से नहीं लड़ सकती, क्योंकि she doesn't want to kill them. 3 birds, 3 trees specifically over there, 3 clouds. ये 3 का चक्कर क्या है? ये देखिए 3 clouds on the top. ये देखिए 3 people duboing. This is all her family members. Either her immediate family, that is her mom, dad and brother, who will drown like this, or it is she, her husband and her son who will drown like this. Why 3 numbers are getting repeated again and again? Repeated numbers are very important in the drawing. ये देखिए, और ये डूबती हुई. And how many trees are that many people? Let's see again. वहाँ पे it was showing as the form of penis. Here it is 1, 2, 3, 4, 5, 6 people, and this is her husband. चलो फिर से दिखाती हूँ. 1, 2, 3 is her mom, dad and brother who are keeping her in the waterfall. कि और कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें डूबना ही है, हमारे लिए मरना ही है. फिर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 the boyfriends, और ये हो गया उसका husband. और ये है in future what will happen to me, ये बंदा जिससे वो शादी करना चाहती हैं. और नीचे देखिए घर है. घर कौन से रंग का है? लाल. गुस्से से भरा हुआ घर जो उन्होंने अभी बनाया है. Constant fighting. There is nothing between the husband and wife. लोगों को क्या लगता है ना कि आपने बच्चे पैदा कर लिए किसी के साथ तो नॉर्मल लाइफ है. They presume everything is normal. Case on case, I realize nothing is normal. Okay, let's go further. Any questions so far? रख लो अपने पास, लास्ट में पूछेंगे.
ये उन्होंने अपने, मैंने उनको बोला फैमिली ड्राइंग बनाओ, फैमिली ड्राइंग में उन्होंने अपने हस्बैंड और बेटे को एक्सक्लूड कर दिया, है ही नहीं. She's standing with her mummy, papa, she's there and her brother is there. Us on earth. उनको अपना हस्बैंड दिखता ही नहीं, बच्चा दिखता ही नहीं, पर इकट्ठे हैं तो दूसरे दुनिया को दिखाई देता है. उनको सिर्फ एक ही बंदा दिखाई देता है बस, और कुछ नहीं दिखाई देता. एंड अगर इस प्लैनेट अर्थ पे उसको एग्जिस्ट करना है तो ध्यान से देखिए, किसी के भी पैर नहीं है, जेनिटल्स नहीं है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा है. मैंने आपको शुरू में कहा था ना, मेरी नानी घर में कहा गया था कि शक्ल अच्छी होनी चाहिए, स्माइल, बस, बाकी बेकार है. So can you imagine, all four of them are standing there, papa, mummy, her brother and she, and all three of them are चिपकाउड and brother को side पे किया है, because that's how she wants to be with her mom and dad. She doesn't want, and किसी के हाथ नहीं है, कोई किसी को छूता नहीं है. So sexual taboos are there existing in the whole story. फिर से उनको बोला बनाने को, तो अब मम्मी और डॉटर एक साइड पे हो गए, and son and father are on one side, but son is the tallest and the biggest. यहाँ पे it is almost like बेटे के आने के बाद, and can you see her one hand over here is more extended towards her mother, but बेटा इतना important है कि he is put in the first two positions. आप पहले वाली ड्राइंग में भी देखें, he is put in the first position. हमारी कंट्री में बेटे को लेके कितना स्यापा है हम सबको मालूम है. तो अगर बेटा पैदा हो जाता है ना तो सबकी स्माइल ऐसे होती है, पता नहीं कौन आ गया है, और आपने बस उसको अपनी थ्रोन ही देनी है. And that is where she's put the brother in, right in the front position as authority. Father, it is also the order that matters, कि किस order में लोग खड़े हैं. यहाँ पे father को prominently सबसे head of the family किया है, और neck missing है. Can you see the necks are missing? Literally broken necks. Very good. Can you also see hands are there, very tiny, and nobody's holding again anyone's hand, they're just stretching themselves out. Why is it that consistently people are standing close to each other but they are not making use of their hands? क्या हाथ लगा दोगे आप किसी को तो कुछ हो जाएगा क्या? Deepa, how much time do I have? I just want to carry you through series of drawings. We have last 2 minutes, Anu. Last 2 minutes. So let's not go anywhere further. So I want you guys to understand that the drawings that I've just shown you give you so much about the person. अगर कोई, सबसे पहले आप अगर थेरेपी कर रहे हो किसी को, ask them to draw, ask them to draw. It's very important, क्योंकि drawings में there is a whole world of theirs that is sitting in these drawings, and from there we can come to know कि healthy रहेगा इंसान, वो कैसे काम करेगा. Can you also see repetition of colors? The dress color is red, and the dress color is, the house color is red. I want you to now see how can we pick up manic depression. On one side, her dress is red, and the other side, her dress is purple in color. The purple or the blue color, that color is of depression. That specific color. And 1 minute. And the first drawing shows a manic. So which means या तो मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, या I am completely flustered. Also look at the size. When she's feeling in manic and feeling like a workaholic, she's huge in size. When she's feeling depression, look at her size. Chotu. Really. And like a chota baby. No cleavage. No womanly body. It looks like a child who's 4 or 5 years old. And look back here. A woman who can achieve everything. इनकी story शुरू हुई थी from one cart. The parents moved to Italy. She was very little. She had studied Italian, so she would translate everything for her parents. She's standing in the supermarket and telling her parents, "Mom, I want that toy." And mom says, "No, we have enough money only to buy groceries today."
We have just come from India and we do not have enough to give you that. But we'll save the money and maybe after 4 weeks we'll buy it. And that went on for all her life. She always bought her clothes on sale, the best deals. She got the best deals, but could never buy for herself that doll, that toy, that story, and could never get that man जिसमें उसको रब दिखता है. This is where I close my session. Thank you very much. I hope you enjoyed it. No, it was indeed very, very enlightening. So, yeah, members and guest visitors, do you have any questions? We have 5 minutes for a question answer session. Anu, you can stop the screen sharing now. Yes. Anybody with any questions? Yeah, I have a question. Hi, Dr. Anu. It was really nice and enlightening to see this. And I have just entered the mental health area, and my daughter is also doing art therapy. She's mere 17 years old, but she wants to deal with this, the mental depression and the peer pressure that the teenagers now are going through. So she was also looking at art therapy as one of the ways of analyzing. So if I have your permission, I can connect her with you. Sure. And you can, guide her how to go through this. Definitely, Shruti. You can get my number from Deepa. She will pass it on, and you can she can connect with me, your daughter. Yeah. Thank you for that. One another question which I had was when you told the client to draw. So you told her to draw different scenarios, right? So what were the scenarios you told her? I told her to draw a scenery, a self-drawing, and her family. These were the only. The first one was a current situation. The first one where she's that was the first drawings that she made, and I asked her, could you please show me how you're feeling when you're feeling great and when you're not feeling great, because she was constantly jumping between two states. The first two drawings very clearly show on one end she's thinking of death, and on the first end she is thinking of earning a lot of money, but when she's earning she's not resting. Right. And the main point was that totally she has not rested ever in her life. हम वो भागते चले जा रहे हैं, पता नहीं किस दौड़ में निकलते चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या मिस हो जाएगा और कौन ना खुश हो जाएगा. That is coming from the understanding of being a woman who has to be successful. She cannot rest. Like you said, no, Indian women conditioning is like that. सबको खुश रखो, हमेशा हंसते रहो, सबका काम करते रहो. Your feelings don't matter. Yeah, मतलब ऐसे बोटॉक्स करा देना चाहिए उनके चेहरे पे. हाँ, बस अपने मन की बात मत करो. नहीं, अलाउड नहीं है. किसी और की तरफ तो देखना बिल्कुल अलाउड नहीं है. आपकी जात गोत्र का होना चाहिए, नहीं तो प्यार में मत पड़ जाना. और सेक्स के बारे में तो सोचना भी मत, बोलना भी मत. अगर तुमने भूले से भी किसी को दिल में बसा लिया है तो तुम्हारा स्यापा, मर जाओ. This sexual taboo still exists a lot in India. Everywhere, ma'am. आज भी there are so many marriages which are not consummated, and even if they are consummated, जो वहां पे चल रहा है bedrooms के अंदर, उसका तो क्या कहना, और जो society देखती है उसका क्या कहना. There is no education around this area. आपको एक last कहानी सुनाती हूँ, और वो ये है कि 4 days back I was working in with someone and she's got PCOD. The girl is an educated girl, business management, married for the last 3 years, can't make a baby, and she realized that she had PCOD ever since she was 12 years of age, because she did not get a period for 5 years after starting with the period, and nobody took her to a doctor. And she thought she is doing prayer to God, इसलिए God ने उसको माफ कर दिया ये सब stupidity से. अब हाँ जी, मैं ना प्रेयर करती थी ना गॉड से, इसलिए गॉड ने मुझे माफ कर दिया. गॉड ने कहा कि उसके लिए ये स्यापा ही नहीं डालना है मैंने. And this girl is only 28 years of age, suffering right now with all kind of IVF kind of treatment where baby on baby is getting aborted and miscarried.
Yes. You know how important it is to talk to adults as well as children about this topic without feeling shy and having a stupid laughter on your face. This is a serious matter. It connects with mental health. Thank you. True, but not only talking to adults, knowledgeable adults. It is these adults who create all this conditioning and false beliefs and limited beliefs. And, they are the ones, like in this case also, it was her parents, right? Take her to a doctor. Right. And So, she kept thinking, पूजा करती हूँ इसलिए मुझे periods नहीं आ रहे. How nice. हाँ, वो भी किसी ने बताया ही होगा ना, उसके ग्रैंड पेरेंट या ने, उसकी मदर ने, कि तुम इग्नोर करो, बस भगवान का शुक्र करो, अच्छा ही नहीं हो रहा, बस put it everything, shove it under the carpet, don't discuss anything. Yes, and this is what goes on in marriages. People get beaten up. I'm not just talking about women. This happens to men also. Men also don't know how to make love to a woman. Sorry. Yeah, they have their own know how to make love to a woman. Yeah. Sorry, I'm picking up a very sensitive topic. Yeah. So nice. Thank you so much for bringing क्योंकि this सेक्स और प्यार करने में बहुत फर्क है. Most of the women get sex, not love making, and most of the women also don't know how to make love. So दो अनाड़ी. कौन सा वाला गाना है कमल जी? थोड़ा सीरियस हो गया. दो अनाड़ी. क्या गोपू सर आप गा दें वो वाला? आप इतना अच्छा गाते हैं. कमल जी भी बहुत अच्छा गाते हैं. दो अनाड़ी एक खिलाड़ी. हाँ जी, वही वाला गाना है. इसमें दोनों अनाड़ी और दोनों खिलाड़ी. बस दोनों अनाड़ी है, बाहर जाके अपने आप को खिलाड़ी समझा रहे हैं. यस यस. और लोग माँ बाप क्या सोचते हैं, अरे गूगल में है ना, सब कुछ है, आजकल के बच्चों को सब कुछ पता है. मैं क्या, आजकल के बच्चों को कुछ भी सही नहीं पता है. हाँ जी. Yeah. So Sarita, are you there? Yes, I am. Yeah. So thank you so much for such an. अरे मैं वीडियो कहाँ गया? Okay, sorry. Thank you so much, Anu, for this was such an enlightening session, and lots of awareness has come into picture. That drawing makes us realize that what all things are going in our subconscious mind. So, and there is, though there has been a taboo not to approach a therapist, not to approach a counselor, not to approach a thing because I will handle it all. Yeah, ye to sab dhakosla hai. That's not the truth. Our story stays in our art, what is we have in our mind. The drawing which we have creating in our mind is one of them. So thank you so much for bringing this up and making it more aware. Creating awareness with the people around us is the main key to cut off the taboo in our life basically. Thank you so much, Anu. Thank you so and we are having a short bio break right now. Okay. Yes, so